So good morning, guys. Now we should start. And first of all, I want to ask how many of you have studied something from the entire block or book? Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, Yes, sir. okay. Sir. So how many of you have studied something from the book? I have started a little bit. I reached till unit 4. Okay, got you. So we'll start from beginning and we'll go first. First of all, I'd like to declare that there are 9 classes. There are 9 classes for the basis 11. So we'll divide 3 classes for each block, right? We have 3 blocks, right? Yes. From first 3 classes, we'll discuss about the first block. Next 3 classes we'll discuss about second block, and next 3 classes we'll discuss about the third block, right? And at the end of the session, end of the counseling, we'll discuss about 4 question papers, right? So that a good practice and good kind of preparation for the examination, right? Okay, sir. Now we'll start from first block. We'll take a screenshot of your attendance after 7:15. Okay, so I'm just starting the block, starting the session basically. So we are going to learn about computer basic and PC software, right? Anybody, anybody can explain about the computer basics? Computer. What is computer basically? What is computer? Who can tell me? Can you define computer? Am I audible or not? Yes, sir, you're audible. Okay. So I need to know how many of you have studied about the computer definition of computer basically. Computer is just an electronic device which takes input, does some process on it, and then gives some output based on Good. what you. That's great. Yes, computer is an electronic device. You are saying that is good, and it takes input and works on output. Okay, then I'm just starting. See, the first block covers. I'm sharing my screen. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our topic is computer basic and PC software. So we should first know about the computer. What is computer basically? As you have explained about computer, that computer is an electronic device which works on input, which needs input and produce output as per the input given by the user. So computer is the definition is absolutely right. But the thing is, what you are studying in a bachelor part, so you should explain about the explain with the functionality of the computer system. It's it is an electronic device which works on input and produces output based on the input given by the user. It is also known as, you can say, there are so many things in your book. 1 second. So in this unit, we'll discuss about introduction, objective, means introduction of the computer system, why computer system can be used, what are the basic need of the computer system. That is the entire course material of
first unit. First unit, block 1. So there are so many things. Like first of all, I'm discussing about the introduction. Introduction means what is computer. We have done. Computer is an electronic device which can now works on input, which is used to store data, also store data, which can be used for further references. It works as a information uh, provider. It works as a calculator. it it can work a huge task within a second with the help of with the help of what? With the help of, one second. So we are discussing about computer system. The computer system, we have already explained about this one. Means computer system is an electronic device which works on the input given by user. Basically, it works as a information provider. It works as a calculator too. It works as a storage of the information which can be further used by the user. But the thing was, why we need computer? We need computer to make our life, our day-to-day life, easier. We need our computer to make our working simpler. If we'll talk about the application of the computer system nowadays, from your house to your office, everywhere, you are surrounded by the computer system. You are surrounded by the computer system means, if you are working, or while you are sitting also, you are using the computer system. Suppose you have a mobile phone, that is also a part of system. It means you are surrounded by completely an electronic device, and that electronic device comes under the system. So application of system, if you are working about application of computer system, you can use in your house. You can see the use of the computer in your school and colleges. You can see the use of computer system in medical science, university, traffic rule system. We can use in agriculture. We can use in, one second, someone, uh, in between, someone coming, just admitting that. So computer system, we are talking about computer system. We are completely surrounded by the computer system. So use of the computer means are everywhere where the user, where the human beings are working. Now come to the point. Next, what are the objective? You have already studied about objective. Objective means we wanted to make our life easier. We wanted to do our calculation so fast. We wanted to save our time. We wanted to save money. And for all these purposes, we use computer system. But there are some limitation of the computer system. And the limitation of computer system is what? Computer cannot think its own, sorry. Computer cannot think its own. Computer cannot make decision. It can take decision as per the input given by the user, right? Now, how the computer comes up? The point is how the computer comes up, how the computer derived, means what is the origin of the computer system, basically. The origin, why we need anything more in our life? Why we need anything more? Whenever we need to do our task easily, whenever we need to complete something in a time frame,
वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू डेवलप। जब हम कभी काम अपना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस बनाए जिसमें वी कैन सेव आवर टाइम, वी सेव आवर कॉस्ट, मीन्स टू डेवलप एनीथिंग न्यू, टू इन्वेंट एनीथिंग न्यू, we have only two goals, that is save our time, make accuracy, and save the money. At that era, we need basically we required a system through which we can make our calculations, we can make our things very easy. In that sense, we have developed a computer system. Computer system comes into the picture when the people need to know how to complete our task in a given frame or before the given time. कभी भी हम जब कभी डेवलप करते हैं कोई चीज, तो पहले डिफाइन करते हैं कि कैसे हम, क्यों हमें किसी चीज की जरूरत है। अगर आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत है तो आप क्या सोचेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन योर लाइफ। तो हमें कॉल करने के लिए, हमें इंटरनेट सर्फिंग के लिए, हमें फोटोग्राफी के लिए, इन सब चीजों के लिए मोबाइल फोन की जरूरत थी, तो हमने मोबाइल फोन डेवलप की। उसी तरह से कंप्यूटर का भी ओरिजिन इसी तरह से हुआ कि हमें जरूरत पड़ी, हमने इन्वेंट किया। तो कंप्यूटर सिस्टम, व्हेन कंप्यूटर सिस्टम कम्स अप, फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज एन abacus. How many of you know about the abacus? कितने लोग जानते हैं abacus क्या होता है? कोई बताएगा? Anybody can? कोई बताएगा कि abacus क्या है? जी जी बताइए। Actually, I'm not getting properly. सर एक्चुअली abacus एक कैलकुलेटिंग बोर्ड होता है। कंप्यूटर बनाया था। हाँ 14x14 के। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। abacus एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था। abacus एक ऐसा बनाया गया था जिससे हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यस, तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इफ यू हैव लर्न, यू हैव हर्ड बेसिकली, कि जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हम इन्वेंशन की तरफ भागते हैं। हमने सोचा कि हमें हवा में उड़ना है तो हमने हवाई जहाज बनाने की कोशिश करी। उसी तरह से हमने क्या सोचा था कंप्यूटर सिस्टम के लिए? हमने क्या सोचा था? वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट नंबर, लार्ज नंबर्स, कि हमें अपने लाइफ को इजियर बनाने के लिए कुछ चीज डेवलप करनी चाहिए, और हमने डेवलप किया। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, so we are developing, we develop always anything to make our life easier. मैंने कहा हाँ, abacus की बात कर रहे थे हम लोग। तो abacus सिस्टम को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में बनाया गया, जिससे हम क्या कर सकते थे? जिससे हम क्या, जी बोलिए। नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, लार्ज नंबर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो देख सकते हो यहाँ पर abacus का एक पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर कहता क्या है कि देखो, इसमें रिंग्स लगी हुई दोनों लेफ्ट और राइट साइड, राइट। और इन रिंग्स के कैलकुलेशन, रिंग्स के से कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो रिंग्स जैसे मान लो हम लोग करते हैं 2 + 2 4, राइट। तो 2 रिंग्स इधर से लिया, 2 रिंग्स इधर से लिया, और फिर हमने कहा लाइन से हमने काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4, and that was 4. So abacus was for the basic calculation. It was developed in China before 3000 BC, right? Before Christ, 3000 before Christ हमने डेवलप किया है। Everybody has study material or not? Yes sir. हाँ, गुड। तो स्टडी मटेरियल से आप लोग चलेंगे। मैंने एक बेसिक पार्ट लिया ओवरऑल, फिर उसके बाद हम सारा, सबसे पहले क्या करेंगे, विल टेक क्लासेस till 8:30, and then we'll discuss about the problem whatever you are facing, right?
Next point is, after abacus, we have introduced the Napier bone system that was developed by Napier in 1617 AD. After Domini, 1617 after Domini, it was developed, and that was basically made of the sticks of bones for the making calculations. And then we have a slide rule. Slide rule. It was also developed by E. Gunter for the slide rule, that the system was working to perform the operations like arithmetical operations only, like addition, subtraction, multiplication, and division. And then Pascal's calculator. You know Pascal calculator? Whatever calculator, basic calculator you are using nowadays, that is known as Pascal calculator, right? जो आप लोग कैलकुलेटर आजकल यूज करते हैं, बेसिक नॉर्मल कैलकुलेटर जो आता है ना, वो होता है आपका पास्कल कैलकुलेटर बेसिकली. Pascal was a mathematician as well as a physician, and he has developed a system to work on calculation, and that was known as Pascal calculator. After Pascal, Levinas comes into the picture, and to reduce all the problem of the Pascal Pascal calculator, he has developed a new system that was known as Levinas multiplication and division machine. And then Charles Babbage comes up. You know about Charles Babbage? कौन जानता है चार्ल्स बेबेज के विषय में? हेलो. Yes, sir. चार्ल्स बेबेज के विषय में जानते हो बच्चे? Yes, sir. Who was he? Computer father of computer. Yes. Yes. After calculating devices, when he started to work on, and he wanted to develop the entire system, that was the different kind of engine, and that is known as computer system. And that computer system is known as, you can say, that is the developed by the Charles Babbage system, and that's why the Charles Babbage is known as father of computer system. Next point is, computer is not only a calculating device, it is an analytical engine also. Analytical engine means you can work on data, you can make analysis using different type of filtering criteria, filtering methodologies. That is also works for the electronical calculations, electronical system. It can work in the civil system. Means suppose you wanted to make a good picture of a building, you wanted to plan for the building, you can use, that is comes under the civil system. Means each and every areas you can use the computer system, right? After comes up with the Charles Babbage, we know about, we should learn about the computer generation system. And the computer generation was what? Anybody who can tell me about the computer generation? Yes, sir. 5 generations. Yes, 5 generations. And why the generations comes up, bache? So with the development of technology, it take up. Yes, obvious. To time development and incremental growth of the technology, we develop the generation system. We learned about the generation system because when we were in initial stage of the computer system, we in 1940, then in that system was working with the vacuum tube. You know about vacuum tube? वैक्यूम ट्यूब के विषय में जानते हैं आप लोग? Basically, first generation system was working in vacuum tube, and with the era of the first generation was 1940 to 1960. But the problem of the vacuum tube system was it was taking too much time to complete the work. Too much time to complete the work, too much time to start the system, because when vacuum comes up, after generation of the vacuum, it can start. Then
as per the technological growth and as per the development procedure of the system, we comes into the second generation system in 1956, and the era was 1956 to 63. And in this system, in this generation system, the computer was working in a transistor. After vacuum tube, it comes into the transistor. And the transistor, why the transistor can take a small space, it can work, it can work faster, it can start, the system can start easily, the system can take less time to start, the system can take less time to start and comes up to the working condition. And after that, after 1963, we invented a new system that was a third generation system. From the era for the third generation system was 1964 to 71, and that was for the IC, that is the integrated circuit. Based on integrated circuit, we are working, and it was so smooth in working. Life was to high than the second generation system. आप लोगों ने सुना होगा आज से 5-7 साल पहले कि किसी के मोबाइल में या किसी के टीवी टेलीविजन में 10 साल पहले की बात करें अगर हम, तो खराब हुआ तो कहते आईसी उड़ गया है, इसका आईसी चेंज करवाना पड़ेगा. That was basically third generation system. And the fourth generation system was developed after 1971, and we are working in the third generation, fourth generation also, and that is comes under the chip. Now all the systems, whatever we are using in present era, that is working on chip. So it is a little introduction about the generation system. It is important for your examination. Whatever topic is important, I'll explain, and I'll tell you. You should note down that one for the complete preparation. Okay. So we have gone through the first to fifth generation. Now the computer system. The next topic is computer system. What the computer system tells us basically. We have already discussed about the computer system. What is computer system and how the computer system works. Computer system can work on input. It can take a space for the storing the input for temporary basis, and it has a storage capacity to store the data for permanent. Computer can basically works on, one second, I'm just is my screen visible? Hello? No, sir. No. Not visible? No, sir. No, sir. 1 second. I think I have not shared. It's now visible? Yes, sir. Okay. Whenever you are getting difficulties like that, you can tell me. Okay. So computer, we have already discussed computer. Computer has, suppose we have computer. Computer works on three things, that is input, you can say process, right? And we can say output. For processing, what we need in the system of processing, we need what? Storage. We need memory, right? Suppose I am saying A is equal to B plus C. Then the B plus C, the calculation of B plus C is going on internally, right? And that is known as process. How many processes are working over here? First, addition, and then assignment. Assignment means it is going to be assigned. Suppose I am giving B is equal to 5 and C is equal to 6. Then A is equal to 11 is going to assign on
A, right? In entire all the processes need the memory. Why need memory? To store the data temporarily or permanently. It depends on the working principle, right? Yes, sir. So the computer always works on input, process, and output. Under process, we can have many things. The first architecture of the system was developed by John Non Newman, and that is known as the system developed by John Non Newman is known as von Neumann architecture. And the system says we have input, next we have under processing, and this one is output. Under processing, we have ALU, CU, IR. One second, just admitting the student. See, we have this one is output. First, we are giving input to the system. It is going to the CPU, you can say, where three parts, three devices are working. That is ALU. Do you know about ALU? What is ALU? Arithmetic logical unit. Yes, arithmetic logic unit. And ALU works for the all type of mathematical calculation, right? Yes, sir. CU, there is CU, that is control unit, right? Control unit. Why the control unit works? To controlling all the devices of the computer system. And the next one is IR, instruction register. Instruction register, whatever instruction is provided by the user, it is going to store the instruction. All the instruction can be stored in a temporary memory for making the operations. So we have basically three parts of the computer system, and is the architecture is particularly known as the von Neumann architecture. किस नाम से जाना जाता है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. नाउ फिर से आते हैं हम टॉपिक पे. तो कंप्यूटर सिस्टम, हाउ द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स? इट वर्क्स ऑन बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट. आप देख सकते हो, यू कैन सी अ पिक्चर लाइक दिस वन. ये देखोगे आप लोग, इनपुट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट. On a storage unit, we are working on control unit and arithmetic logic unit too. Clear हुआ? कोई question? There are so many operational units in the computer system, and the first operational unit is what? First operational unit is arithmetic logic unit. It is used for doing all kinds of calculation in the computer system. Then the system unit. System unit is basically used to control the entire part of the system, like port and connectors. Port and connectors. Port and connector is what? Where we can attach the system, attach any kinds of devices into the system. Once again, I'm taking your attendance for the day today, right? Can everyone open their camera if possible? I just want you to take a screenshot as an attendance. Okay.
Okay, I'm just checking. Okay. Oh, 1 second, somewhere is. Okay, one more time. Yes, done from my side. Okay, I'm just pasting it in the Word file. Okay, you can on or off whatever you want. Now, coming to the point, ports and connector. Ports and connector of the systems are those area through which we can interconnect the other devices like printer, like monitor, like any kind of devices like camera and all. Have you seen about port and connector? Have you seen the port in your system? Yes, sir. आप सबने देखा होगा, आपके लैपटॉप भी है तो लैपटॉप में भी पोर्ट्स होते हैं जहां पर आप लगाते हैं यूएसबी पोर्ट, यूएसबी लगाते हैं, यानी कि पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि PS2 के सॉरी बहुत सारे डिवाइसेस ऐड करने के लिए होता है वहां पर ऑप्शन। तो आप जितने भी पार्ट होते हैं दैट वाज द पोर्ट्स एंड दैट वाज कम्स अंडर द पोर्ट्स एंड कनेक्टर। नेक्स्ट वन इज क्या? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मींस क्या है? इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं SMPS भी बोलते हैं, राइट? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इज व्हाट? ये क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई कहता क्या है? जैसे आपने अपने सिस्टम में देखा होगा, चाहे आपका नॉर्मल सिस्टम है, कंप्यूटर है, या आपका लैपटॉप है। कंप्यूटर है तो आपने देखा होगा जो उसका सीपीयू है, सीपीयू के पीछे फैन लगा रहता है जो चलता रहता है हमेशा, जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्शन देते हो इलेक्ट्रिसिटी का। यू आर जस्ट प्लग इन योर इलेक्ट्रिसिटी इन द SMPS and it is generating the current for your system, so for your entire motherboard. And if you are putting your electricity in SMPS is generating electricity for your motherboard, as it is going to supply on the motherboard, and according to the input or power input given by SMPS, the computer starts working. तो अब अगर आप सिस्टम में देखेंगे, लैपटॉप में भी देखेंगे, तो लैपटॉप्स में भी there are small fan you can see over there which is always being running when you have started your system. But the computer system, you can see SMPS like that. Motherboard is क्या है? Motherboard is a main circuit of the system. Main circuit of the system where all types of inputs are coming in. First electricity comes up, then it works for each and every devices. And we have already learned about, I have already basically discussed about what? Von Neumann architecture. This is very important for your examination. Basically, the history behind it was Von Neumann architecture was developed by John Von. John Von has developed a new architecture of the system, which is known as Von Neumann architecture. Basically, if you go about the background of the John Von, he was a mathematician, and as per the mathematical procedure, he has developed an architecture. And the architecture says, I have already told about memory system, control unit, and arithmetic logic unit, and then input and output. We have developed in another ways like that, but a system basically we have breaked it out. Now the entire system is memory system, memory required for each and every part, as we have already discussed, and the control unit and ALU, and CU and LU for all the calculation part, and then input and output is required for that. Input is required and output can be given. So you can prepare a device like this also, whatever we have explained. 1 second, I'm just explaining once more.
See, you can write like that: input and output. You can see memory, you can see CU, ALU, IR, and this comes under the particular this part. Input is required and it will produce the output. So array will be like this. Okay, is it clear? Yes, Shreya. So What is accumulator? accumulator is a temporary system. ACC, if you are working about accumulator is a temporary memory. Whenever you are working, whenever any instruction is being given by user, it comes into the temporary memory, and that temporary memory is known as accumulator. Okay. So it's a basically a part. Yes, Rhea? Part of ALU. Not part of ALU. It is a part of register, and there are so many types of registers, right? Okay. I have only explained about the instruction register. Okay, sir. We'll discuss each and everything in second semester in MCS 12. MCS 12 is a subject with the computer architecture. Under that, we can learn about each and everything about the memory and all types of registers. Okay. Okay. Thank you, sir. Welcome. Classification of computer. So it's a very vast topic. Classification of computer. Classification of computer can be made in different types. You can elaborate the classification of computer in basic in many kinds, like based on working principle, based on performance, based on purpose. We can develop. You can elaborate the system. We can classify the system based on performance, based on purpose. So if you are working about based on purpose, we have mini computer, microcomputer, mainframe computer, supercomputer. I think you have already you know about this one: mini computer, microcomputer, supercomputer, mainframe computer. Yes, sir. Yes, and based on performance, this is based on purpose. Based on performance means this is based on performance. These are based on purpose means hybrid digital analog and hybrid system. बेस्ड ऑन पर्पस के अंदर आता है हाइब्रिड डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम, बट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के रूप में आता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी है, आप लोग कह सकते हो कि ये सारी चीजें पढ़ी है कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, और मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, अगर हम बात करें एनालॉग क्या करता है, जो लॉग्स एंड एंटी लॉग्स पे चलता है। लॉग्स और एंटी लॉग्स का मतलब क्या हो गया, मींस ऐसे चलता है ना जी, सिंपल। देखे हो कहीं पे आप लोग, एनीबॉडी है हु कैन हर्ड अबाउट दिस वन? आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, देखते हो कभी ईसीजी मशीन वगैरह? यस सर। हार्ट बीट रीडर वगैरह, एंड दैट इज बेसिकली एनालॉग सिस्टम। वो एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि देखो ये लॉग बनाता है, ऊपर वाले को लॉग बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस, आपने कहा रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा बाद में, ठीक है। सो अभी हमने क्या कहा कि बेस्ड ऑन पर्पस में हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा एनालॉग सिस्टम आता है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैज अ एनालॉग सिस्टम व्हिच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हार्ट बीट रीडिंग कर सकते हो, पल्स रीडिंग कर सकते हो,
ईसीजी मशीन आप देखते हो, ईसीजी रिपोर्ट कैसे मिलता है आपको, everybody कैन नॉट सी and cannot understand what's going on behind that. लेकिन ये these are what based on पर्पस के बिहाफ पर ये डिफाइन किया गया। फिर कहते हैं हम लोग क्या, एनालॉग के बाद आता है डिजिटल सिस्टम जो 0-1 में चलता है, और हाइब्रिड सिस्टम इज व्हाट, हाइब्रिड सिस्टम इज द कॉम्बो ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, and we can say we are using hybrid system nowadays because as per our requirement we can change the device output mode, right? This is about classification of system. You will study, and if you will get any getting any difficulties, you will ask question from that. See, there is technology, classification of technology. We have already discussed about analog system, digital system, and hybrid system. We will study this one. Now integrated circuit. Integrated circuit, in third generation we have explained about the integrated circuit. Integrated circuit is what? Semiconductor device. Yes, semiconductor device. And the purpose of semiconductor device is, Harsh? बोलिए। Make our yes Shreya, you may. Processes all the information to the computer. That's also great. Yes, good. So semiconductor devices are used for what? Making our system easier, our calculation easier, sharing our information easier. Now electronic circuit. What is electronic circuit? What is circuit basically? Electronic circuit, you have already learned about electronic circuit in 12th class. सर एक सर्किट जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक करंट थ्रू पास करता है, उसको सर्किट बोलते हैं। इसमें रेजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बताया। इलेक्ट्रॉनिक आप अब ट्रांजिस्टर को क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कि कुछ और है? वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आएगा, क्योंकि उसमें भी तो हो रहा है ना, मतलब क्या नाम है अपना, बेसिकली उसमें भी इलेक्ट्रिक थ्रू हो रहा है। ओके, गुड। देखो आप लोगों में से कुछ लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो मैसेज टाइप ना करें क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान। मैसेज के बदले आप लोग बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग and I think the class will be very interactive. I'm here to solve each and every problem whatever you are getting. Okay. ओके, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फर्दरमोर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं तीसरा टॉपिक अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। पहला टॉपिक में मैंने क्या बताया था आप लोगों को इंपॉर्टेंट के लिए? पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। गुड। दूसरा क्या बताया था मैंने? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। गुड। और तीसरा ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। तो ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। अब देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चलता है, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता है, तो कैसे चलता है? 0 और 1 पे, जिसको ऑफ और ऑन कहते हैं, यही कहते हैं ना हम लोग। तो 0 और 1 पे ही हमारा कोई भी डिवाइस चलता है। नॉर्मल बात करें तो 0 का मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई या कोई भी सप्लाई हमने बंद कर दिया, नॉन वर्किंग मोड। 1 का मतलब क्या हो गया? वर्किंग मोड। तो अगर हम बात करें तो मॉडर्न जो पहले कंप्यूटर्स थे क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब में चलते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या लेता है? टाइम ज्यादा लेता था। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली इसके सिस्टम को बनाने के लिए हमें लगभग 18,000 ट्यूब्स की जरूरत पड़ती थी।
18,000 ट्यूब की जरूरत पड़ती थी, और 18,000 ट्यूब यूज करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, उसको मेंटेन करना। इस वजह से क्या होता है, जनरेशन में टाइम लगता था। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, ट्रांजिस्टर आया, तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होता है कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे अप्रोक्स 200 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करके, और वो हमें हमारे वर्किंग प्रिंसिपल में रहता था। ये एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना, जो भी डाउट होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके विषय में हमें आज लास्ट में, नेक्स्ट में हमें एक चैप्टर ही मिलेगा, पूरा एक यूनिट ही मिलेगा, लेकिन वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। एनीबडी हु कैन टेल मी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बोलिए। Acts as a connection between us and the computer, like गुड गुड। एनीबडी एल्स? almost like an interface. गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने, अच्छा बताया आपने। और भी कोई बताएगा? Operating system is a kind of software that runs behind the bare metal and the softwares that we use. गुड, दैट्स आल्सो गुड। बेसिकली देखो, हम बीच बीच में आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? कि वी वांटेड टू मेक आवर क्लास इंटरेक्टिव, and if you'll question, if you'll talk about each other, talk in the classes about any topic, it means our interaction will build up, and when the interaction will build up, will do good in our life. So operating system is what? Operating system is a system software. पहला पॉइंट क्या है? that is a system software. जैसा कि श्रेया ने बताया कि that is used for making interaction between user and the computer device, right? So operating system is a system software basically which is used to provide us platform to install or work on any kind of application software. It can make interaction between the user and the machine. समझो आज हमने एक सिस्टम असेंबल किया, जब let it be means we have just assembled a system. Is the system worthful? No, because we have just installed, we have just assembled the system. There is nothing through which the user can interact. And for making interaction for the user, we need a operating system in it. हमें इसके अंदर क्या डालना होगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हमें एक वर्किंग प्लेटफॉर्म दे देगा जहां पर हम काम कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट डिटेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वी नीड टू लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कौन बताएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई बताएगा सॉफ्टवेयर के विषय में? व्हाट इज सॉफ्टवेयर बेसिकली? सर सेटअप प्रोग्राम। सेटअप प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज software, where each and every program has its own task to perform, and there are collection of programs. So software हमने कहा collection of programs, right? And the program is what? Set of instructions. Set of instruction is known as a program, and when we have collection of programs, we can say that
collection of program is a software, and software can be further divided into basically three parts. That is system software, application software, and utility software. Right? System software is like operating system, तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बताओ iOS, जी. iOS, Windows, Windows, Linux, Windows, Linux, Linux, MS DOS, macOS, macOS. गुड. तो ये सारे क्या है? Solar ऑपरेटिंग view. सिस्टम. Android, हाँ, मैं समझ गया, आप लोगों को क्लियर है. तो ये सारे क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज वाई इट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम? बिकॉज इट provides us platform to work on it. It provides us platform in the system to install another software. And all those software which is being installed by user to work on, that is known as application software. Like MS Office, like Tally, like you can say Photoshop, like many more softwares. Okay? And what are utility software? जो अदर देन दिस वन, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए यूटिलिटीज के विषय में. जो छोटे छोटे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि मान लो आपको साउंड ड्राइवर डालते हैं आप लोग, ग्राफिक्स ड्राइवर डालते हैं आप लोग, या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जो डालते हैं जिसकी हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is basically used to develop, which to make interaction between user and the computer system. The main purpose of operating system is to provide environment where the user can work in convenient way. Operating system को कह सकते हो it is the most important part of the computer system. और ये भी कह सकते हो कि without computer system, without an operating system, the computer system is just like a डब्बा. और कुछ भी नहीं है, ये डब्बा है. कब? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब, क्योंकि उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. विंडोज, मैक. यस श्रेया. सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे एंड्रॉइड, लिनक्स, विंडोज, ये सब होते हैं. यूटिलिटी, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर वगैरह होते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? अभी बताया ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे एमएस ऑफिस आप यूज करती हैं, राइट? एमएस ऑफिस भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जहां यूजर काम करता है, जिसमें यूजर काम करके अपना डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? या हम अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कहीं के लिए जब हम बनाते हैं कोई सॉफ्टवेयर जिसपे हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा इंटायर वर्क परफॉर्म करता है, दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Google Meet. Google Meet is also an application software. We are working on that. That is web-based application software, right? Anything more? No, sir, thank you. Application of computer system. Already discussed about application of computer system. आप देख सकते हो, मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि application of computer system is what we can use everywhere in the computer system can be used everywhere in the world. Every domain of the human beings. Means आप बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम में आप यूज करते हैं, आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में यूज करते हैं, आप एजुकेशन में यूज करते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, आप अपने घरों में भी यूज करते हैं. तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर साइंस in all the areas. This is also one of the important question for your examination. What are the application of computer software as a computer system?
कंप्यूटर सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? ये चौथा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? वी कैन यूज आवर कंप्यूटर सिस्टम nowadays in all the areas where the human beings lies, and that is the first area is banking. Where? Why? In banking system, in every banks we can have automated, we can automated the system through which we can automate our customer can work its own, or they can visit for the branches, and branches can work with based on the computer system. I like there are so many, there are MIS system, management information system, through which the bank has maintained the entire data of the users or their customer, and they can search within a click of mouse, and they can get the results, they can get the details of the customer, they can get the details of operation done by the customer on the computer system. ट्रैफिक लाइट कंट्रोल भी आप जानते हैं। देयर बेसिकली there are three lights in the traffic system, and which works on the algorithm developed by the government for the purposes. And the next one is sports में भी हम देख सकते हैं। तो you can go through this one. स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, लर्निंग में, स्कूल कॉलेजेस में, रिसर्च में, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज limitation of the computer system, limitation of a computer. What are the basic limitation of the computers? हमने पहले बताया था, फर्स्ट स्टेज में ही बताया था जब क्लासेस स्टार्ट किया था। तो लिमिटेशन वो में अपने आप पे सोच नहीं सकता, अपने से कुछ कर नहीं यस, सकता। बहुत बढ़िया, दैट कैन बी सुपरवाइज्ड बाय अ यूजर, राइट? अपना खुद को नहीं संभाल सकता, सेल्फ केयरिंग नहीं है ये। कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस, लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं, प्रोग्राम्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन। Whatever program you have developed for the computer system, it can work on that only. It has no intelligence, it cannot think your own, cannot self-care, cannot think, cannot retrieve memory, it has no emotions. These are the limitations of the computer system. Next point is the first unit is over now. First unit of first block is over now. Now we'll go for the second unit. Under second unit, we'll learn about function of a computer. Is my screen visible? Yes, sir. Sir. This is function of. Our motto is to complete 2 units per day. I'll take all the queries back from you so that we can complete the entire syllabus within our 9 classes. So first topic is components of a digital computer. We have already discussed, but I wanted to know from you all guys. What are the components of computer system? There are some input devices, there are some output devices, there are storage, ALU, CU, and ALU, CU comes up together CPU, right? Yes. Up, then computer. Yes, Shreya. Yes, you may. No, I was saying the same thing, that it's both CPU, storage, and output. Actually, your voice was not clear, so can you speak once more?
Sir, I was saying the same thing that you were saying. Yes, we have already discussed in first unit, and the thing is coming in the second unit also. So it's depend on you all. I'm just going through the syllabus one by one. Actually, the IGNOU provides the counseling session. Counseling session means what? You have to study your own, ask question from the counselor. Counselor will reply as per your doubts. But I know there are 9 classes, so we can come through the each and every topic. That's why I'm going from each and every topic, right? Okay. So components of digital computer and their role. Basically, digital all the components has its own roles. Like suppose you are working with a mathematical calculations, the ALU can perform their task based on the instruction given by you. If you are working with if you are giving any instructions, that is only possible from your input devices. If you are going to input, you wanted to connect your any other devices, there is a requirement of control unit to control the entire part, control the system. So the every system has every component has its role to perform. CUE is going to control the entire component of the system. ALU is going to control the arithmetical logical conditions. Means whenever you need to work on, it will work. So I'm just skipping this one. Now next part is what? Computer as a data processor. How the computer as a data processor? We have already discussed about the computer system, that a computer, one second. हेलो, यस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. okay. So how the point is computer as a data processor, right? How the computer is a data processor? तो हमने क्या बताया था, कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है. व्हाट इज इनपुट? इनपुट के अंदर क्या होता है? डेटा, राइट? जैसे फिर डेटा लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, देन उसके बाद प्रोसेस आउटपुट करता है. होता है. गुड. और आउटपुट क्या होता है हमारे लिए? इंफॉर्मेशन हो गया. अब देखो, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. डेटा क्या होता है? सारे रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, राइट? इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाता है तो इंफॉर्मेशन कहलाता है. जैसे कि सिंपल, बुक क्या है? डेटा है. और बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या की? पढ़ाई करी और हमने रिजल्ट अपने पास हम लेकर आए, तो ये क्या हो गया? हमारा इंफॉर्मेशन हो गया. जैसे कि मैं आपको क्या दे रहा हूं? इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डेटा नहीं दे रहा हूं. डेटा तो ऑलरेडी आपके पास बुक पे पड़ा हुआ है. उस डेटा के ऊपर आपको हम इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं, आप उसे कलेक्ट कर रहे हो. और जब इंफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्या बन जाता है? वो नॉलेज बन जाता है. गुड. तो ये बहुत ही आपस में, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. क्लियर? तो computer as a data processor, because computer always works on the data. It stores the data, it
stores data, it performs operation and gets into the information for the user. That's why it is known as a data processor. Next है language of digital computer. What are basic language of digital computer? कंप्यूटर किस लैंग्वेज को परफॉर्म करता है, बताएंगे आप लोग? सर बाइनरी 0 और 1. 0 और 1, बहुत बढ़िया. और किसी ने कहा बाइनरी, दोनों ने बढ़िया कहा कि कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट? तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 और 1 होता है. हम लोग आगे पढ़ेंगे. सर बाइनरी कोड पे चलता है. जी, बाइनरी सिस्टम पे चलता है. कंप्यूटर हमेशा ये भी कह सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेजेस पे चलता है. और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है. अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं. तो नंबर सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग एलेबरेटेड तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 5 नंबर से 10 नंबर का पेपर में आएगा, ध्यान रखना है. Number system. Basically, there are classification of number system, and that is binary number. Next one is decimal, octal number. Third one is decimal number, and fourth one is hexadecimal number. There are basically 4 types of numbers, that is binary number, octal number, decimal number, and hexadecimal. And each and every number system has their rules and regulations. So every number has a base number. Base. Right? Base is what? Binary. Base for the binary number system is 2. For octal, there is 8 as a base. For decimal, we have 10. For hexadecimal, we have 16. Somebody is asking something. Wait for this one. Wait for the recording classes. Please wait. We'll tell you. And one thing more, I'll take 2 attendance between the classes. First one after 15 minutes of the starting of class, and the last one is at 8:45, 15 minutes before ending of the class. So number system, there are basically 4 types of number system which we have to study. And the base for the that is binary number system, octal number system, decimal, and hexadecimal. Base for the binary number system is 2. For octal, 8 is there. For decimal, we have 10. And for hexadecimal, we have 16. Numbers are, if we are working with binary number, we have 0 and 1, because it works on n minus 1 of the base. N minus 1 of the base means n is what? 2. So it will work from 0 to 1. Here 0 to 7. क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर. 0 to 9, और यहां पे होता है 0 to 9 और A to F. A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14, F for 15. क्लियर? यस सर. ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है एंड नंबर सिस्टम के बेस क्या होते हैं. याद रखना है, जब तक बेस नहीं पता होगा कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते. तो यू शुड मस्ट नो अबाउट द बेसिस. नाउ कन्वर्जन. नंबर कन्वर्जन सिस्टम.
Can you elaborate? Can you tell me what is the working number of our own? On which number we are working nowadays in day-to-day life? Decimal. Decimal. डेसिमल नंबर में हम लोग काम करते हैं. दैट्स गुड. तो डेसिमल, विल स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल. नंबर 1, डेसिमल टू बाइनरी. राइट, डेसिमल टू बाइनरी. अब डेसिमल टू बाइनरी में क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. डेसिमल टू बाइनरी में सबसे पहले हमने ले लिया, मान लो 15 ऑफ 10 इज इक्वल टू व्हाट ऑफ 2. यहां बेस हमने क्या लिखा? 10. तो इससे रिप्रेजेंट होगा कि ये किस नंबर सिस्टम में है? डेसिमल में. में है. एंड हमने यहाँ बेस लिखा 2 और व्हाट का साइन लगा दिया. इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइनरी में क्या होगा. राइट. ऐसे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है आपका. 5 नंबर का आता है, 5 से 10 नंबर का. तो जब भी कभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है 50, इसका बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 से डिवाइड करना शुरू करें. विल ऑलवेज डिवाइड फ्रॉम 2 बिकॉज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर इज 2. 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1. अगेन 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1. 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1. अगर यहां पर हमारा डिवाइजर से छोटा हो गया तो हम छोड़ देंगे और हम नीचे से ऊपर इस वे में लिखेंगे. इट मीन्स 15 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 1 1 1 ऑफ 2. 1 1 1 1. देखो ये वाला 1 हमने पहले लिखा, ये बाद में, उसके बाद ये, उसके बाद और ये. इज इट क्लियर बच्चे लोग? Yes, sir. गुड. अब हम देखते हैं कि क्या हमने सही करा. तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं. डेसिमल टू बाइनरी को हम कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल. दोनों साथ साथ पे पढ़ते जाएंगे. दूसरा प्रोसेस बाइनरी टू डेसिमल. और बाइनरी में क्या मिला है हमें? अगर हमने ये लिख दिया, ये कैलकुलेट होके आ गया, अगर 15 आ गया तो इट मींस वी हैव डन राइट. सो फॉर conversion to binary to decimal, conversion of binary to decimal will go like this. 1, whatever numbers we are getting, 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2. Right? Now 1 into 2 is 2 plus, sorry, 1 second. After writing this one, we'll put the power of each 2's. 0, start from 0, 1, 2 and 3. Then what will be? 1 into 8 plus 1 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 2 to the power 0 means 1. 1. Good. It means 8 plus 4 plus 2 plus, it means 15, right? Yani binary of this one is equal to 15 of 10. Done? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दो. नो सर. ओके गुड. तो दो चीजें हमने देखी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है
कि 20.25 of decimal is what of band. दूसरा क्वेश्चन, see, there are two parts of the system. This is known as fractional part and this is known as Montesa part. सिंपल कर लो, मंटेसा अभी नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरिया है, और ये आपका होल एरियाज है, राइट। तो विल कन्वर्ट बोथ इन डिफरेंट वेज। पहले हम क्या करेंगे, पहले 20 को हम कन्वर्ट करेंगे टू 10, रिमाइंडर 0, टू 5, रिमाइंडर 0, टू 2, रिमाइंडर 1, 2 to the 4, रिमाइंडर 1, 1, रिमाइंडर 0। यही हुआ ना 20 का। अब 0.25, यस दिवाकर, yes Divakar, you wanted to ask something? You have raised your hands, you wanted to ask something? Okay, no issue. पॉइंट वाले पार्ट को क्या करते हैं, we always multiply with 2 before whole number, complete number can be divided by 2 while the fractional part can be multiplied by 2. And this is what? This is 50 now. Again multiply by 2. And this will be 0, 0. Right? Now all the numbers of this part is under 1 and 0. So just put it here. Yani 0 and 1. Now 20.25 of 10 is equal to, write down this one, 10100.01. Is it clear? Yes, sir. So 1.00.01 कैसे हो गया? Yes, sir. I have the same question. कौन सा, ये वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो आप? Yes sir. देखो, ये जैसे ही हमारा पॉइंट के बाद, ये कितने डिजिट का था हमारा ये नंबर? 2 डिजिट का। वो कैरी वाला सिस्टम समझना। तो 1.00 हुआ ना, तो ये अब 2 डिजिट तो इतना ही मिलेगा हमारे पास, राइट? तो इसको हम लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और लेफ्ट में जाकर के इसको शिफ्ट कर देते हैं। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने 0.25 को इंटू 2 किया, फिर 0.50, फिर दोबारा इंटू 2 किया, तो ये हम इंटू 2 कितनी बार कर रहे हैं, ये हम तब वैसे डिसाइड करेंगे कि एंड में डेसिमल के बाद 0 आ जाए, सारे 0 हो जाए। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल और correct। सर एक बात और मुझे क्वेश्चन पूछनी है हाँ। कि जब आपने ऊपर जैसे हमने 20 का तो लिख दिया 1011 करके, ऐसा है ना, हाँ। और 0.25 का हमने 0.01 क्यों लिखा है? आप बताता हूँ आपको। 0.01 लिखा है, ये 0.01 का मतलब 0.25 होता है, उसको मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया ना हमने अभी, अब इसको मतलब बाइनरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब सर जैसे मुझे फर्स्ट पार्ट तो 20 वाला समझ आ गया, और ये मुझे यहाँ तक समझ आ गया कि 0.50 इंटू 2 किया, अब हमें 1.00 मिल गया। हाँ। यहाँ तक मुझे समझ आ गया, लेकिन आपने 1.00 को 0 आपने 1.00 को 0.01 लिखा है, हाँ। तो ये नहीं मैं फिर समझ से आया। समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा पार्ट है। आप जैसे पढ़ते हो ना आप लोग कैरी और बॉर्डर, वही वाला सिस्टम यहाँ पे है। और कंप्यूटर साइंस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है
कंप्यूटर साइंस बड़ा मैथमेटिक्स पार्ट को अलग तरीके से लेकर चलता है, जो ओके आपके जनरल लाइफ में भी होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। ओके सर, एक दो चीजें होती है, एक ओवरफ्लो होता है। ठीक है। अगर मान लो आपके पास 2 घर हैं, राइट, यस सर। और 3 लोगों को रहना है, तो कैसे रहोगे? तो पहला यहाँ आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे, हाँ हाँ तो बाहर रहना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो क्या करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। ओके। जब तीसरे को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं क्या, इसमें एक प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में ओवरफ्लो का। हम्म। ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास 2 ही डिजिट था ना नंबर, हम्म तो रिजल्ट भी 2 ही डिजिट में आना चाहिए हमारा। हम्म लेकिन 2 डिजिट में तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इधर आ गया 1। हम्म तो और आंसर कितना होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है। हम्म तो यहाँ पूरे के पूरे 0 आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर एक ही यहाँ पर 1 है तो लेफ्ट लास्ट वैल्यू से हम इसको स्वैप करना शुरू करते हैं, यहां पर डाल देंगे, मतलब 0 0 में यहां ऐड कर देंगे इसको। तो बेसिकली अगर 1.00 है और इसको हमें डेसिमल वाले फॉर्म में लिखना है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 ही तो आ रहा है, तो 1 ही तो ऐड करोगे ना। यहाँ पर तो हमेशा आएगा तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता कभी। तो हम डायरेक्टली 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, हम 0.1 क्यों ले रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सर ये। आप कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ कि आप कर क्या रहे हो, मैं समझाता हूँ। मैं ये कर रही हूँ कि जैसे हमें 20.25 को कन्वर्ट करना था, तो 20 वाला पार्ट तो मुझे आ गया। उसके बाद 0.25 वाला जो कन्वर्जन है ना, वो मुझे यहाँ तक समझ आ गया कि 0.25 को 2 से इंटू किया पहली बार, तो हाँ हमारा 0.50 आया। फिर 2 से किया तो 1 आ गया, 1.00। जी, इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम 1.00 को 0.1 क्यों लिख रहे हैं। क्यों और अगर लिखते, मान लो 1 ना वही आया समझो, वही और समझो, वही हाँ 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। कभी भी किसी अच्छा, नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम आएगा। हमेशा हमेशा 1 ही आएगा और हमेशा हम 1 को 0.1 ही लिखेंगे एज अ रूल। नहीं नहीं नहीं, अब बता रहा हूँ क्या लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 0.33 को हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। अभी पहले आपको बेसिक सबसे इजी चीज बताया मैंने, ठीक इसको है प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कैसे सही है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो ये 0 1 हो गया, तो ये कितना डिजिट हो गया बाहर में, ओवरफ्लो कितने डिजिट का हुआ है, 1 का। 1 का हुआ है। तो एक ही ना ऑपरेशन कर सकते हो आप, एक ही डिजिट को चेंज कर सकते हो। ओके। तो कहां से शुरू करोगे, किसी को भी अगर मान लो हमने 100 लिखा, 1 रुपए आपको इसमें इंक्रीमेंट करनी है, तो किधर से करोगे, लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, लेफ्ट से। अगर यहां यस। करेंगे तो 101 होगा, लेकिन यहां अगर हम्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हम्म तो लेफ्ट से करते हैं, पहला रूल ये है, ठीक है। मैथमेटिक्स के रूल के ऊपर चल रहा हूं मैं। ठीक है। अब जब हम 0 1 में आ गया और ये ओवरफ्लो हो गया, तो इसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम्म। रूल होता है कि लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या कर देते हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 1 हो गया, हम्म राइट। अब देखो 0 1 का मतलब, 0.01 का मतलब 25 होता है, 0.25 होता है। कैसे भाई, तो अभी बताता हूं मैं। 0.01 अगर हमारे पास बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या होगा, यही चाहते हो ना आप। तो इसको लिखोगे क्या, 0 × 2 + 1 × 2। आपने 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन सिस्टम, पढ़ा था। हम्म हम्म। ये क्या है, 0 है, 1 2 3 4, राइट। तो इधर यस। क्या होता है, -2 माइनस, हाँ। बिल्कुल। तो ये पॉइंट के बाद वाला क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला। -1 -2। देखो ये जो बताता है, निगेटिव पार्ट बताता है, राइट। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज कहां से शुरू होती हैं, ये कहां से शुरू होती हैं, 0 से। जैसे मैंने हाँ बताया, इसका पावर कहां से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं देना, राइट। हाँ हाँ। तो 0 के बाद क्या आता है, -1। -1। तो इस पे पावर क्या देंगे, -1, फिर -2 -3 देते चले जाएंगे। अच्छा। तो 0 ×
2 to the power -1। ठीक है तो 2 ठीक है to the ठीक है। तो आ जाते हैं। एक सेकेंड दे दो मुझे, क्लियर कर देता हूँ, बाकी लोगों को भी डाउट होगा। क्लास में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग को डाउट होता है लेकिन पूछते भी नहीं है, तो वो भी गलत है। तो -2 -1 का मतलब इनवर्स हो गया, क्या होगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, होगा। ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0, ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा। प्लस 1 इंटू 1/4, 1/4। हाँ 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/4 क्या हो गया 0.0 प्लस 25 हो जाएगा 0.25, करेक्ट 0.25 हो गया। करेक्ट। अब समझ में आ गया आपको? अब लेकिन पता है सर, अब इससे आया है मुझे मुझे ये करेक्ट करना अगर मैं सही बोल रही हूँ, जो आप पिछला वाला बता रहे थे पॉइंट के बाद हम जब हमारा 1.00 आया था तो हमें बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में चाहिए, इसीलिए हमने उसमें +1 ऐड किया ताकि हमें 0.01 मिल जाए। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, 0 और 1 के फॉर्मेट में चाहिए, 0 1 के सिवा बाइनरी में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है इसीलिए हम उसको अब तो सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अब आपने अभी तो आपने ये जैसे 20.25 लिया था फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो हमारे पास तो 0.25 था, उसको हमने इंटू करा 1.00 आया। मान लो कोई और नंबर है जैसे अभी कोई भी अभी अभी श्रेया में बता रहा था कि 0.33 होगा भी तो भी तक करेंगे, उसको कैसे करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक अब उसमें क्या होता है कि जैसे पहली बार 1 आ गया और यहाँ पर क्या आएगा 2.5 आ गया मान लो, या 2.2 आ गया, राइट। हाँ फिर इसको 2 से, अब इसको क्या करेंगे स्टोर करके रख लेंगे पहला बिट। अच्छा अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 44, फिर 2 से किया हाँ 58, फिर 2 हाँ से करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट। हाँ करेक्ट इसको दूसरा बिट यहाँ स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है समझ में आ रहा? अभी पहली बार ये 1 आया था, राइट। हाँ यहाँ पर पहली बार 1 आया था, हाँ अब दूसरी बार 1 आ गया तो दूसरा इधर से लेफ्ट से अब राइट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सर रुको रुको एक सेकंड, ये वाला दोबारा बताओ मेरे को, ये समझ नहीं आया। 22 इंटू 2 किया 44, ठीक है आपको मैं 40। एक लाइव ले लेता हूँ, 0.33 ले लिया तो हाँ कितना होगा 99, 2 हाँ किया 8, और ये कितना हो जाएगा 88 88 आ जाएगा। यस तो एक अलग से मेमोरी ले लो जिसमें क्या आपने डाल दिया 1 डाल दिया, ठीक है समझ गई। ये कितने डिजिट तक का है 2 डिजिट तक का है और पॉइंट। फिर इसको हम स्किप कर देंगे, फिर 0.98 लेंगे, ठीक है, ठीक है फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो एक मिनट सर, भूल जाते हो। नहीं नोट भी कर रही हूँ साथ में एक फिर 1 सेकंड। ये आ गया हाँ 1 तो फिर ये 1, फिर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब ये कितने बिट का हो गया 2 बिट का हो गया 2 9 बिट था, 2 पॉइंट। बिट हो गया ना, हाँ 0.98 यही अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। बस। तो सर हमें रुकना कहाँ तक है अप्रोक्सीमेटली में? ऐसे तो मैं तो फिर अभी 2 से इंटू कर दूं, क्या, ऐसे तो हम फिर से 2 से इंटू कर सकते हैं, तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ तक स्टॉप करना है अप्रोक्स? अच्छा ये बताओ कि 0.33 को कभी 2 से आप डिवाइड कर सकते हो? हाँ ये बात भी सही है। देखो मैथमेटिक्स का कुल रूल होता है, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, रिकरिंग पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा होगा रिकरिंग के बाद आपने पढ़ा होगा अप्रॉक्स, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पॉइंट अगर 1 को 3 से डिवाइड करने के लिए कहूं, हो पाएगा ये कभी? नहीं सर। तो इसमें इसका क्या रूल पढ़ते हैं हम लोग, 0.333 और रेकरिंग लगा देते हैं, राइट। ओके ओके तो ये ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, राइट। समझ गया ठीक है सर, इसलिए समझ गया। जितना डिजिट हो उतना लिख करके अप्रॉक्स लिख देना, राइट। जितना कोई, हाँ उतने डिजिट लिख के अप्रोक्स लिख देना है, ठीक है हाँ करेक्ट हो समझ गई। गया। यस गुड, अच्छा लगा, ऐसे ही सारे लोग करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा।
डाउट क्लियर, दिस इज द सेशन फॉर क्लियरिंग योर डाउट। किसी को और कुछ पूछना है इसमें? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, मैंने दो चीजें पढ़ाई है अभी तक। Sir, what if we multiply and we get 1 in the first multiplication by 2? Like if we have a big number like 0.7 or 0.75. 0.75, just taking 75, right? Yeah. 0.75, what is it saying? Multiply by 2, that will 1.50, right? 1 will store in another area. Now 50, that will be multiplied by 1, that will be, right? Okay. Now the question is what? Second one is coming up, now? Yeah. So it will be like this. So 0.11. Yeah. सो सर बेसिकली हमको जब भी 0.1 में आएगा तो हमको 2 बाइनरी निकालने हैं। हाँ, जितना डिजिट करता है, अगर छोटी वैल्यूज हैं, जब यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे 2, 2, 3, 3 ऐसे कुछ आता है, तो इसको इस साइड शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं 0 आता है तो इस साइड शिफ्ट करते जाएंगे नंबर। अगर आप लोग इसको करोगे ना तभी जाके क्लियर होगा। 2, 4, 10 क्वेश्चन करना, नहीं होगा तो मेरे को बताना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं। कितने लोगों ने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था इसमें से? मैंने किया था सर। आपका तो नाम ही याद है मुझे। मैंने भी किया था सर। ओके, आपको सर ने बताया था कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, राइट? हाँ, यस। तो आप लोग अभी से एवरी डे इज द एग्जामिनेशन डे मान के चलो, राइट? ठीक है। और 4 क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो अभी। आज का टास्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है सर। और जितने उसमें कन्वर्जन सिस्टम है अभी मैं पढ़ा देता हूँ पूरा, और जितने भी कन्वर्जन सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं सारा करके एक कॉपी में रख लो। तो वो जो कन्वर्जन सिस्टम्स करने हैं हमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करने ना सिर्फ? नहीं, सारा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, टाइम है ना हमारे पास। ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, और जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे कर लो, तो आपके एग्जामिनेशन में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा ना अभी कभी। ठीक है। एवरी डे इज द एग्जामिनेशन डे। हमने 4 क्वेश्चन पहले बताया, एंड ऑक्टाडेसिमल ये सब आप अभी बताएंगे? अभी बता रहा हूँ बच्चे, अभी तो टाइम है ना हमारे पास पढ़ने के लिए। 20 मिनट। यस सर। 20 मिनट में हम कवर कर लेंगे उसको। ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, राइट? अब हम आते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर क्या होता है? सपोज वी हैव 15 ही लेके चलते हैं। व्हाट ऑफ इट, राइट? तो conversion of decimal to octal will divide it by what? 8. 8 1 जा 8, और remainder what? 7. Now the answer will be 15 of 10 is equal to 17 of 8. सर एक सेकंड, हाँ बोलिए। आपने 17 लिखा है? हाँ जी, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, अभी बताया था। ठीक है, मैं भूल गई थी। ओके। अगर हमने 1 1 2 ले लिया, 17 of 8 तो क्या होगा? बोलो। एक सेकंड। 14. बोलो, कितना टाइम लग रहा है आपको? 14 sir, 14. 14? Yeah. 40 सर। कितना? और 0. सिंपल डिवाइड करना, डिवाइड का प्रोसेस लेके चलते हैं। 2 ही डिजिट ले लो इधर से, नॉर्मल डिवाइड करो। 8 1 जा 8, कितना बच्चा? 3, 32 हुआ। कितना हो गया? 14. 14। फिर
8 से डिवाइड, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना 6 6, तो 112 of 10 is equal to 160 of 160 of 8. 8. 8. It's very simple. तो ये this is decimal to octal. Now octal to decimal. Octal to decimal. Under octal to decimal, we'll learn, means suppose we have 1/7 of 8, then what will be 10. Then the conversion of this one will go like this: 0 and 1 power 1 into 8 plus 7 into 1. 8 plus 7 is equal to 15. So my question is correct, right? 17 of 8 is equal to 15 of 10. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा रह गया एक, अब क्या बचा भाई? तो Hexadecimal. नहीं, अभी अभी बाकी है भाई, ऑक्टल टू बाइनरी Okay. और बाइनरी टू ऑक्टल। बढ़ते जाएगा ना जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रोसेस, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो वी हैव 17 इन ऑक्टल, देन व्हाट शुड बी इन द बाइनरी? सी, बेस कितना है ऑक्टल का? 8, बाइनरी का 2. अगर हम सिंबल बात करें, हम इधर से बात करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी पे ही चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टल टू बाइनरी में हम क्या करते हैं? वी हैव 2 डिजिट इन ऑक्टल, राइट? पहले इसको हटाएं। कितने डिजिट हैं ऑक्टल में हमारे पास? 2 डिजिट। दोनों को इंडिविजुअल बाइनरी नंबर निकालेंगे, तो 1 का बाइनरी तो 1 ही हो जाएगा। 7 का क्या होगा? डिवाइड कर लोगे आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन डिवाइड कर लो आप लोग, तो कितना होगा? 2 3 जा 6, यही होगा ना? यस सर। अब देखो, एक चीज मैंने लिखा था यहाँ पे, हमेशा जब भी कन्वर्जन करेंगे तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 और बाइनरी का बेस होता है 2। तो ये लिखेंगे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए रूल अप्लाई करेंगे। 8 is equal to 2 to the power n, right? Yes, sir. 2 to the power n is equal to 8, तो 8 2 to the power n is equal to क्या होगा? 2 to the power 3, तो n is equal to कितना हो जाएगा? अरे सर एक सेकेंड, 8 ऑक्टल में हमने 2 to the power n लिया और बाइनरी में हमने 2 to the power n 8 लिया। नहीं, आप फिर से समझो। ऑक्टल का बेस कितना है? 8 है, राइट? हाँ। और किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस 2 है, 2 to the power n is equal to 8 लिख देंगे, राइट? ठीक है। तो 2 to the power n is equal to, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 to the power 3 आएगा। तो n is equal to कितना आएगा? 3. It means the number, whatever number we have converted, right, it should be in 3-digit number, so we'll add 2 ones over here. Number of digits, ये नंबर ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब देखो, 1 का हमने सिर्फ 1 लिखा था, 7 का 3 डिजिट का नंबर मिल गया, राइट? अगर हमें इसका करना था तो क्या लिखा हमने? स्टार्टिंग में 2
जीरो लगा दिया। इस साइड नहीं लगा सकते क्योंकि इस साइड लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। किसी भी नंबर के बिगिनिंग में जीरो लगाने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ, एंड में जीरो लगाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। राइट। तो इसको हमने लिया और अब हमारा बाइनरी क्या बन गया, 17 ऑफ 8 इज इक्वल टू 001, 1 का लिख दिया हमने और अब 7 का लिख देंगे 111 ऑफ 2। इज इट क्लियर? तो वो तो वैसे भी आ रहा है ना, अगर 17 का बाइनरी में करेंगे तो 1 तो वैसे भी 001 था और 7 तो आया ही 111 था। हाँ जी। तो हमने ये किस चीज का लॉजिक है कि 2 का n 8 है और 2 का n, और अगर 2 की पावर 3 है तो n 3 हो गया, तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने वाला फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ अप्लाई हुआ है सर? नंबर ऑफ डिजिट निकालने वाला फॉर्मूला ही तो ये हमने पढ़ा, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 8। यही ठीक तो है। नंबर निकालने का फॉर्मूला था भाई। बेसिकली जैसे हम सब बाइनरी में 2 बेस होता है, वैसे ही हम ऑक्टेगल को बाइनरी में करेंगे तो हमको 3 बेस चाहिए। और ये क्यों अच्छा पॉसिबल, ये अच्छा, क्यों मतलब जरूरी आप था? ये बता रहे हो कि हम जब ऑक्टा से बाइनरी में करेंगे तो हमारे 0 1 3 के मल्टीपल्स में आएंगे, है ना? Yes, working is sorry, अच्छा, octal and hexadecimal are different type of number system. ठीक है ठीक है It is ठीक है। not working system, right? So there are ओके, so many rules behind that. और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए अगर नहीं करोगे तो आपका रूल्स निकल जाएगा। अगर नॉर्मल ठीक ऐसे है। कहें तो 1 1 1 1 ये डेसिमल में कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होगा, ये ऑक्टल में क्या होगा, ये आपका बनेगा क्या, 17। ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। और सर ये हेक्सा के लिए और ऑक्टल के लिए है ना एप्लीकेबल? ये सिर्फ हेक्सा और ऑक्टल के लिए है क्योंकि दैट इज नॉट अ हाँ, वर्किंग नंबर। ठीक है। ओके, हेक्सा और ऑक्टल के लिए। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने इसी नंबर को ले लेना है, 001 111 ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट ऑफ 8, राइट। हाँ, सो हम इसमें क्या करेंगे, अब जब भी कोई नंबर आता है, चाहे ये नंबर हो या दुनिया का कोई भी नंबर हो, तो इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। किधर से, इस साइड। मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं क्योंकि इसमें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नंबर आप लोग बोल दो, जो ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है? क्लियर है ना? यस सर। ले लिया। अब इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। अब एक सवाल आप लोग कर सकते हो, सर आपने तो ऐसा लिया कि 3 का पेयर बन गया, नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? हाँ, तो हम ऐड एक सर एक्स्ट्रा ऐड कर करेंगे देंगे ना। पीछे में लो एक नंबर ऐड हमने और एक नंबर में एक बढ़ा दिया, एक ले लिया। अब 3 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो 2 नहीं, जीरो लगा दो दो। जीरो लगा दी सर। ओ ठीक। और सर अगर एंड में एक्स्ट्रा, हाँ हाँ, लेकिन पहले ही लगाएंगे हम। ठीक है ओके। हम इधर से शुरू करेंगे तो एंड की तो बात ही नहीं आएगी ना फिर। ठीक है, समझ गया। तो ओके। इसको सबको अलग अलग लिखेंगे, 001 101 हाँ, 010 1527 111। इसका हो जाएगा डेसिमल में 1, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 7। तो 110101011 ऑफ 2 इज इक्विवेलेंट टू 1527। हो गया सॉल्व। सर 1 मिनट रुकना। देखो क्लासेस आप लोगों की है, आप लोग जितना देर बोलोगे मैं रुकूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस बस मेरा एक टारगेट सेकंड। ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ा दूं कि आप लोग कहो कि यस वी हैव टेकन। हाँ सर, बढ़िया पढ़ा रहे हो सर आप। हो गया सर, हो गया। ठीक है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अब देखो, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब एक बच गया है, क्या बचा है हमारा, हेक्साडेसिमल, राइट। यस सर। और हमारे पास 10 मिनट का टाइम भी बचा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल टू हेक्सा। आज की क्लास आप लोगों को 10 मार्क्स देगी। आउट ऑफ 100 आप 10 to 15 मार्क्स का आपका क्लास हुआ है आज। और असाइनमेंट में भी आप असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे, तो असाइनमेंट में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आज की क्लास के अकॉर्डिंग। ओके सर।
तो असाइनमेंट देखो बच्चे, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि असाइनमेंट खुद बनाओ, कहीं से कॉपी ना करो। जो असाइनमेंट खुद से बनाएगा उसका 50% एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो जाएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। मेरा मान है कि मैं आपको गाइडेंस अच्छा देता रहूं। Sir, for making the assignment, do we have to download that sheet? Like they were mentioning something in the program guide that we have to attach one front page. Yeah, of course. For making assignment, just download the assignment question paper from IGNOU website. And at the beginning of the assignment, you have to attach the question, whatever you are getting from IGNOU website. And then you have to attach all the answer script, answer whatever you are written, right? Right, sir. But no front page or something, like they have one front page saying name, course, and year, all that in the. Yeah, of course. For front page should have your basic details, all the basic details, like academic details, basically, like name, enrollment number, course code, code and so on. Can we write it ourselves, or do we have to take the printed page and fill? No, you can write, or you can you can take printed, whatever you want. Okay. It's depend on you only. You can prepare your sheet in your system, and you can attach that one also. There is no other criteria now. Okay. Right, Thank sir. you, sir. Yeah. So we have 110. We have 110. Now we'll divide 110 by what? 16. 16. Then what will be the answer? 16 7 is 96, right? 16 6 is 16 6 is 96. Remainder is what? 14. And 14 means, in hexadecimal, 14 means E. Delta. E, right? We'll write E over here. It means 110 of 10 is equal to 6E of 16. Is it clear? Sir. Yes, sir. Clear. Now decimal to hexa, now hexa to decimal. Means hexadecimal to decimal. It means 16E of 16 is equal to what of 10? And 6 into 16 plus E into 16. 0 and 1. It means 6 into 16 plus 14 into 16. Sorry, 14 into 1. 1. 96 plus 14 is equal to 110. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now we have one second, my pen is not working right now. 1 second, please. Okay. Now next is hexa to binary. Binary. And binary to hexa. So we have hexa 6E, right? What of 2? Then we'll convert 6 and E into binary number. अच्छा 110, right? यस सर आप लोग डिवाइड करके बना सकते हो.
एक और तरीका है 2, 4, 6, 8, 16 ऐसे लिख लो। सॉरी गलती ऐसे कर सकते हो। एक टेबल बना लो 1 2 4 6 8 2 2 2 2 2 करके एक टेबल बना लो 0 1 2 3 4 कर लिया। ये क्या कर लेंगे हम 1 2 4 8 16 कर लिया। कितना बनाना है 18 राइट 14 चाहिए राइट। तो इसमें कहीं 14 है नहीं, लेकिन हम ऐड 110 तो 8 ले हाँ लेंगे। 8 के नीचे 1 कर दिया जी। अरे एक सेकंड यार, अब 8 के बाद कितना 8 15 14 माइनस 8 कितना बचा 6। तो 6 है इसमें नहीं है तो 4 ले लिया हमने। 2 ले लिया। फिर कितना बचा 2 तो ये ले लिया बाकी 0 डाल दिया। ये हमारा ये भी तरीका है आपकी मर्जी जैसे बनाना है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एग्जामिनेशन में डिवाइड मेथड से ही। ठीक है तो सर हम डायरेक्टली इससे नहीं लिख सकते, वो उसका दिखाना पड़ेगा पूरा जो आप दोनों प्रोसीजर। दिखा दो लेकिन वो ये मत दिखाओ बस। अच्छा ठीक है, 2 ये to the तो power हमारी n is equal अंडरस्टैंडिंग। to 16। अब नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए निकालेंगे 2 to the power n is equal to 16। तो 2 to the power n is equal to 2 to the power 4। therefore n is equal to तो ये नंबर कितने डिजिट के होने चाहिए 4 डिजिट के। तो यहाँ पर स्टार्ट में हम क्या 0 ओवर या तो 6e is equivalent to 0110 1110 of 2। क्लियर एनी डाउट देखो कोई आया होगा 6 को 110 कैसे किया? और सर 6 अरे को डिवाइड कर लो ना बच्चे 6 को 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 1 कितना हुआ। यस सर। वो तो हमने अपने मर्जी से लिख दिया। आप भी जब करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी अपनी मर्जी से लिख पाओगे। ठीक है राइट सर। यस सर। ठीक चल तो that is the end for the day today. I think we have covered most of the thing। सर बाइनरी टू हेक्सा बात वही है जो पहले आपने किया था। लो ये भी बता देता हूँ वही 4 का पेयर बनाना है। ठीक है 0 यस सर। और अलग अलग इसको कन्वर्ट करने हैं। ठीक है 6 हो गया तो ये भी हो ठीक है। और ठीक है वही हो गया सेम। हाँ सेम टू सेम। ठीक है now we have covered our total 10 to 15 marks for the examination today right। ओके Next we'll start tomorrow। Any question Right. you have you may ask। Sir, in the middle column, I left out with the part of some class. So where I will get the recording of this class to? It will be uploaded on RC YouTube channel, but it will take 1 or 2 days। Monday or Tuesday it will be uploaded right। Otherwise I'll give you in the next class। Okay I'll try to give you in the next class। Okay राइट सर। Okay, sir. सर इंडक्शन मीटिंग में फ्रंट पेज स्पेसिफिक दिया हुआ था तो वही डालना है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना बना सकते हो और कल मैं आपको फ्रंट पेज का भी मैं एक दिखा भी दूंगा जैसे भी बनाना है। देखो जरूरी नहीं कि वही बना सकते हो। आप अपना बेसिक डिटेल्स आपको लिखना है आप लिख सकते हैं जैसे चाहे राइट। ओके सर। सर एक्चुअल में एक डाउट था कि असाइनमेंट का कह रहे हैं आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं या फिर वहीं पे क्या नाम है स्टडी सेंटर पे आके सबमिट? यस असाइनमेंट ऑनलाइन आप लोगों का ऑनलाइन मोड का क्लास है राइट। LMS पर कर देंगे सर। तो आपको सिर्फ LMS पे ही करना है। आपको बाकी कहीं नहीं करना है। अगर कहीं और करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है सर। LMS पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है वहीं पे आपको हाँ करना सर है। वहाँ पे दे रखा है।
सर कंप्यूटर लैब की क्लासेस नहीं होंगी ना? कंप्यूटर लैब की क्लासेस अभी जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा हम उसका भी करेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, राइट? ओके Right. सर। ओके सर। Okay, sir. Okay, sir. ओके Bye. देन Thank you, sir. Okay, sir. Thank you.